किसी भी महान लोकतंत्र में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमेशा खड़ा होता है। जरा सोचिए, देश के नियम बदलने की सर्वोच्च शक्ति आखिर है किसके पास? क्या ये ताकत उस संसद के पास है जिसे जनता ने वोट देकर चुना है, या फिर उस लिखित संविधान के पास है जिसने खुद उस संसद को बनाया है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इसी सवाल ने हमारे इतिहास के कुछ सबसे बड़े और नाटकीय कानूनी टकरावों को जन्म दिया है। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के सर्वोच्च कानून को बदलने की इसी प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे आर्टिकल 368 की पूरी वर्किंग को और उस ऐतिहासिक रस्साकशी को जिसने आज के आधुनिक भारत की नींव को आकार दिया है। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये देश की आत्मा को बचाने की कहानी है। तो आज की चर्चा का रूड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे संविधान के लचीलेपन और कठोरता से, फिर समझेंगे इसके मैकेनिज्म को, संशोधनों के प्रकार, संसद और न्यायपालिका की वो ऐतिहासिक लड़ाई, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत और अंत में कुछ जरूरी आलोचनाओं पर भी बात करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शानदार दस्तावेज की डिजाइन की, जिसे वक्त के साथ बदलने के लिए बनाया गया है, लेकिन अपनी अहमियत को खोए बिना। आपने गोल्डीलॉक्स का नाम तो सुना ही होगा, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। संविधान में बदलाव के मामले में हमारे देश ने बिल्कुल यही गोल्डीलॉक्स अप्रोच अपनाई है। एक तरफ ब्रिटेन का संविधान है जो इतना लचीला है कि उसे एक आम कानून की तरह आसानी से बदला जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का संविधान है जो एकदम कठोर है, जिसमें बदलाव करना लोहे के चने चबाने जैसा है। हमारा संविधान इन दोनों के बिल्कुल बीच का एक परफेक्ट और सटीक बैलेंस है। अब आप शायद सोचें कि आखिर ये बदलाव होता कैसे है। चलिए पार्ट 20 के आर्टिकल 368 की इस मशीनरी को थोड़ा करीब से देखते हैं। संशोधन की शुरुआत के कुछ बहुत ही दिलचस्प नियम हैं। सबसे पहली बात, बदलाव का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ संसद में लाया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं के पास इसकी शुरुआत करने की कोई पावर नहीं है। इसके बाद बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है। और अगर बात देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की हो तो कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मोहर भी चाहिए होती है। और फिर आता है फाइनल स्टेप। यहाँ एक ऐसा नियम है जो वाकई थोड़ा हैरान करने वाला है। आम कानूनों के मामले में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, लेकिन संविधान संशोधन बिल के मामले में बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति इस बिल को ना तो अपने पास रोक सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। उन्हें अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। वो इसके लिए पूरी तरह बाध्य हैं। लेकिन रुकिए, संविधान के हर हिस्से को बदलने के लिए एक जैसी मेहनत नहीं लगती। इसे मुख्य रूप से 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए, पहला है साधारण बहुमत, जो आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर है। जैसे नए राज्य बनाना हो या कुछ प्रशासनिक बदलाव करने हो, ये काम आसानी से हो जाता है। दूसरा है विशेष बहुमत, जो असल में आर्टिकल 368 के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट्स जैसी अहम चीज़ों में बदलाव के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा है सबसे मुश्किल वाला, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति। ये तब चाहिए होता है जब आप राष्ट्रपति के चुनाव या केंद्र राज्य की शक्तियों जैसी एकदम कोर संघीय चीज़ों को छूते हैं। मशीनरी तो हम समझ गए, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब ये सवाल उठा कि फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को बदलने का असली बॉस कौन है। यहीं से संसद और न्यायपालिका के बीच एक ऐतिहासिक रस्साकशी शुरू हुई। ये टकराव किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। 1951 के शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन 1967 के गोलकनाथ केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और इस पर रोक लगा दी। इसके जवाब में संसद ने 1971 में 24वां संशोधन पास कर दिया, जिसमें उसने अपनी असीमित ताकत का ऐलान कर दिया। ये टकराव बिल्कुल अपने चरम पर था। और फिर आया 1973 का वो माइलस्टोन, केशवानंद भारती केस। और इसी 1973 के केशवानंद भारती केस से जन्म हुआ एक ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांत का जिसने सब कुछ बदल दिया, मूल ढांचा यानी द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कोर्ट ने जो बीच का रास्ता निकाला वो वाकई कमाल का था। उन्होंने कहा, संसद जी, आप संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकते हैं, मूल अधिकारों में भी, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, कोई भी ऐसा बदलाव नहीं हो सकता जो संविधान की बुनियादी आत्मा या उसके मूल ढांचे को ही खत्म कर दे।
इससे आप एक अदृश्य ढाल समझ सकते हैं। मतलब आप घर का रंग बदल सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। तो इस नींव में, इस मूल ढांचे में आखिर है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसे साफ किया है। इसमें शामिल है संविधान की सर्वोच्चता, हमारा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्वरूप, शक्तियों का बंटवारा, संघवाद, निष्पक्ष चुनाव और न्यायपालिका की आज़ादी। ये वो चीजें हैं जिन्हें संसद अपने भारी भरकम विशेष बहुमत से भी नहीं मिटा सकती। लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का क्या शानदार तरीका है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट नहीं होता। इस पूरी प्रक्रिया की भी कुछ जायज़ आलोचनाएं की जाती हैं। कई संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रोसेस में संसद के पास बहुत ज़्यादा पावर है। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ संशोधन के लिए कोई अलग से विशेष बॉडी नहीं है। राज्य अपनी मर्जी से कोई बदलाव शुरू नहीं कर सकते। और तो और, अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बात पर ठन जाए तो आम बिल की तरह जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का कोई ऑप्शन ही नहीं है। राज्यों को कितने दिन में अपनी मंजूरी देनी है, इसकी भी कोई टाइम लिमिट तय नहीं है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद इसके पीछे का विजन बहुत साफ था। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कठोर और स्थायी बना देंगे तो आप एक जिंदा और आगे बढ़ते हुए राष्ट्र के विकास को रोक देंगे। समाज बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, तो इस बदलाव की गुंजाइश होना तो लाजमी है। और इसी बात को मशहूर संविधान विशेषज्ञ केसी ने बहुत खूबसूरती से समेटा है। उनके मुताबिक हमारा संविधान अत्यधिक कठोरता और बहुत ज्यादा लचीलेपन के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। और यही उस गोल्डीलॉक्स बैलेंस की सच्चाई है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ये जरूरत पड़ने पर बदल सकता है, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोता। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। क्या मूल ढांचे का ये सिद्धांत लोकतंत्र में एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखता है, या फिर ये जनता द्वारा चुनी गई संसद की अल्टीमेट पावर को कम करके एक ऐसी न्यायपालिका के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत दे देता है जिसे सीधे वोट देकर नहीं चुना गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। Welcome to This Explainer. I'm so glad you're here, because today we're tackling something absolutely huge. We're breaking down exactly what the process of Indian constitutional amendment looks like. We're talking about the supreme law of the land, but more specifically, how it breathes, how it evolves, and how it actually adapts over time. Ultimately, the rules governing this document dictate exactly how your most fundamental rights are protected from just arbitrary changes. So let's jump right in. So think about it. How do you rewrite the supreme law of an entire nation? It's a massive dilemma, right? If you make a constitution too easy to change, well, it just becomes a regular law that any passing government can completely tear up. But on the flip side, if you make it totally impossible to change, it turns into a fossil, totally out of touch with a growing modern society. So how exactly do you strike that perfect balance between rigidity and flexibility? Here's our quick roadmap for today. We'll start with the concept of the living constitution, then look at the actual process of amendment, the types of amendments, the epic fundamental rights battle, the basic structure doctrine, and finally, we'll wrap up with some criticisms and a conclusion. All right, part 1, the living constitution, or the underlying philosophy behind all of this. Now, if you look at the global stage, constitutional design usually falls into two massive extremes. Over on one side, you've got the British Constitution. It's incredibly flexible, very easy to change. On the exact opposite end, the American Constitution, which is notoriously rigid and extremely difficult to alter. But India's architects, they brilliantly decided, nope, we're not picking either extreme. Instead, they built a system right in the sweet spot, a really clever blend of both flexibility and rigidity. Which brings us to part 2, the process of amendment, the mechanical engine of change. This entire system revolves around one critical piece of text, Part XX, Article 368 of the Constitution. This is the article that grants Parliament the specific constituent power to add, vary, or repeal any provision. It's the ultimate tool for change. But, as we'll see in a bit, this immense power actually has a definitive, invisible boundary. Okay, so initiating a change is actually surprisingly straightforward, but actually passing it, that is a real gauntlet. Step 1, an amendment can only be initiated in either House of Parliament, so definitely not in state legislatures. Step 2,
it can be introduced by a minister or a private member, and get this, you don't even need the president's prior approval to get started. Step 3 requires what's called a special majority, which we'll break down in a second, and Step 4 is absolutely crucial. Both houses must pass the bill separately. If there's a disagreement between the two houses, no way. There is zero provision for a joint sitting to resolve the deadlock. You just have to find consensus. And things get even tougher in Step 5. If the amendment alters the country's federal structure, like changing the division of powers between the center and the states, it must also be ratified by the legislatures of at least half the states by a simple majority. Step 6. Once passed, it heads to the president. Now listen to Step 7 carefully, because this is an incredibly strict rule. The president absolutely must give their assent. They literally cannot withhold it. They can't send it back for reconsideration. Done deal. Finally, in Step 8, it officially becomes a constitutional amendment act. Moving on to Part 3, Types of Amendments. Let's look at the 3 distinct pathways. Remember how Article 368 asks for a special majority? Well, that demands 2 things at the exact same time. First, you need a majority of the total membership of the House. That means over 50% of all seats, regardless of who's absent on that given day. Second, you also need a majority of 2/3 of the members who are actually present and voting. It's a very high threshold, deliberately designed to force some pretty broad political agreement. Actually, it helps to think of the Constitution like a giant house. Pathway 1 is the simple majority. This is like, painting the walls. Everyday changes, like altering state names or parliamentary salaries. Technically, these fall outside the strict scope of Article 368. Pathway 2 is the special majority. This is like knocking down and moving internal walls. This is for altering fundamental rights or directive principles. Then you have Pathway 3. Special majority plus state ratification. This is like digging up and altering the very foundation of the House itself. You'd use this for massive changes to presidential elections, the Supreme Court, or dividing legislative powers. Now for Part 4, the fundamental rights battle, a massive showdown between Parliament and the judiciary. This sparked what is basically a decades-long legal ping-pong match. Let's track this. Back in 1951, with the Shankari Prasad case, the Supreme Court said Parliament could amend fundamental rights. Simple enough. But then, in 1967, in the Golokhnov case, the court completely reversed itself, saying fundamental rights were totally immune to amendment. Well, Parliament fired right back in 1971 with the 24th Amendment, explicitly declaring, actually, we have the power to change anything. Then came the absolute watershed moment in 1973, the Kesavananda Bharati case. Here, the court agreed Parliament could amend fundamental rights, sure, but they invented a strict limit called the basic structure. Parliament tried to override this limit yet again in 1976 with the 42nd Amendment, essentially claiming absolute unlimited power. Finally, in 1980, the Minerva Mills case struck that absolute power down, permanently cementing the judiciary's right to review amendments against this so-called basic structure. Which perfectly leads us into Part 5, the Basic Structure Doctrine, the untouchable soul of the Constitution. So what is this untouchable core? Well, it includes the supremacy of the Constitution itself, its sovereign and democratic nature, secularism, the separation of powers, the federal character, and the power of judicial review. Now, the Supreme Court has never actually given one final, exhaustive list, but over various judgments, these core principles, along with things like the parliamentary system, the rule of law, and the equality principle, have been identified as the unamendable soul of the document. And what's absolutely fascinating here is how incredibly rare a basic structure doctrine is globally. It's a uniquely Indian legal innovation that essentially tells lawmakers, look, some values are just entirely off-limits, no matter how gigantic your majority is. Let's hit Part 6, criticisms and conclusion, because of course, it's not a perfect system. While the process is undeniably ingenious, critics are quick to point out some major flaws. For instance, there's no special constitutional body created just for amendments, like you'd see with a constitutional convention. The power is heavily concentrated in the central parliament. I mean, states can't even initiate an amendment. And if states are asked to ratify a federal change, there's literally no time limit for them to do it. Plus, as we mentioned, the lack of a joint sitting means deadlocks can totally paralyze the process. At the end of the day, critics argue the whole procedure just feels a bit too much like passing an ordinary legislative bill. To really understand why the system was built this way with these specific trade-offs, we have to listen to its architects. Pandit Jawaharlal Nehru argued that if you make a constitution rigid and permanent, you stop the nation's growth, the growth of a living, vital, organic people. They built this flexibility in on purpose, so the law could actually evolve as the society evolves.
And Dr. B.R. Ambedkar defended the framework brilliantly. He noted that the Assembly deliberately refrained from putting a seal of finality and infallibility on the Constitution. By avoiding those extreme hurdles you see in the American or Australian models, they provided a relatively straightforward procedure. The goal was to ensure the Constitution could be updated without, needing an entire revolution to do it. Which leaves us with a final, pretty heavy thought to ponder. Does this delicate dance between Parliament's massive power to amend and the judiciary's power to protect, does that truly safeguard the core of the nation? It's a living, breathing system, and it is constantly being tested. Thanks so much for joining me on this explainer. Keep learning, keep questioning, and I'll see you next time.